the biggest issue. Yeah, it is the biggest issue in the today's scenario. Ki everyone is getting income tax notices. Like even you have filed the income tax return, then you got the notice for ki your total credit 26 as में whatever the serious amount is coming, you have not reflected in your ITR. So this is the one scenario where you got the income tax notice. And another scenario, sometime as being the housewife or as being the non-working, we just forget to file ITR return. But what happened? We have some FD or we have some asset, like we have house property where we are earning some rental income, or it is might possible if we have one land, we have some securities, we have some mutual fund investment in demat account or anywhere. During the year when we required some fund, what we did, we have sold that. So when you have sold, it will be the transaction through a stock exchange or some regularized entity where your PAN and Aadhaar is already updated. What will happen? Happening is that you have not filed your return, but your whole financial transaction is recorded in income tax, in SEBI, and some other portal. Might be possible uh, RBI is getting your whole information, whatever you are dealing in financial instrument. Like when you have purchased insurance, when you purchase insurance, you provide PAN and Aadhaar to insurance company, whether it is the Max Aviva life insurance or Tata AIG, any kind of the insurance we have purchased, whether it is the life insurance or general insurance. Every time insurance company is asking your KYC. It means they are taking your PAN card, your Aadhaar card, and your personal detail, your phone number, your email ID. Why they are taking? They are putting all information, whatever you have did in during the last year for any purchase of mutual fund, equity share, or any insurance, whether it is the life or general insurance. They are providing wholesome information to RBI, to Government of India, and income tax. So what income tax is doing? Suppose that as being the Manish Kumar, I have not filed return last year and I have purchased insurance of the 2 lakh rupees. I have purchased equity share of the 10 lakh rupees. Okay. I had earlier mutual fund of 6 lakh rupees. This year I have redeemed, or we have exchanges with other mutual funds, swap up. Like I have the mutual fund with the ABC Private Limited, and now I have switch over with the any other company, XYZ company, or even the in same company. I had the a small cap mutual fund, and now I'm looking for the blue chip mutual fund, or you can say IT sector mutual fund or infrastructure mutual fund. So what will happen? The same company redeem with current value or whatever we have invested as the purchase cost, like we have purchased in the 100 rupees, now we are selling redeem in 120 rupees, 115 rupees. The 15 rupees is our profit. This is the recorded in exchange. It is the recorded by that bank or mutual fund house, and that information is given to RBI, that information given to Government of India, that information is given to income tax department. If we have not filed return, or we have filed return but we have not provided this kind of the facility, this kind of information, we have not incorporated profit or loss, whatever we have earned last year, then income tax department will provide notice to you. And there is the one more scenario. Suppose that you have purchased 3 to 4 house, you have 2 house or 3 house, and all house is running has one home loan, house loan chal raha hai. Every house, every home is backed by the home loan. The home loan from where you have taken, definitely it is the bank or financial institution. Again, bank and financial institution has your whole detail. Okay, when they have whole detail and you have not provided, you have not filed return, or in return you have not provided detail of the house property, then income tax department can ask to you
sir, you have the house, two house property where you are paying EMI, interest, etc., all those things, but you have not shown in interest from the house property. So please explain. So if you have such kind of the activity, whether you have house, whether you have equity share, whether you have the mutual fund or any other financial transaction, so you have to file return. And if you have not filed return, to file your return, and when you are filing return, collect all information and provide whole information into your return. Otherwise, department will send a notice. Now, coming to the main point, suppose that income tax department had sent notice to you. अब आप कहोगे कि मनीष चलो ठीक है, whatever I did mistake, मैंने पहले जो भी गलती किया, now I want to rectify, or what is the remedies. अब डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस तो दे दिया, what you have to do now? First of all, you have to understand your notice, whether notice is writing कि you have filed return or not, or notice might be possible कि you have filed return but you have not shown some source of income, या notice ये हो सकता है कि you have disclosed income of only 4 lakh rupees but your TDS has been deducted on 10 lakh rupees, or you have the redeem of the mutual fund of the 10 lakh rupees, 20 lakh rupees, or you have sell house of the 50 lakh rupees, 60 lakh rupees, but you have not disclosed in your ITR. So this kind of the notice or information department provide in notices. So first of all, if you have knowledge, then it's good. Otherwise, connect with some consultant. They have the good knowledge in income tax. उनके पास आप जाएं और show your notice. Then they can take कि what they have to do next step. कि like आपका return नहीं file हुआ तो he will try to file the return, because once you got the notice, the department gives option to you to file a return. Then you can file return, and whatever the income tax is coming, obviously बात है, you have to pay. Once suppose there is no opportunity to file a return, then इनकम जो आपका प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल है, तो he will prepare reply and provided on faceless. Sometime it is the faceless, sometime they have to visit assessing officer, जो आपका जो नियरेस्ट इनकम टैक्स ऑफिस होगा, जहां पर आपका वार्ड होगा, वहां पर वो जाके उस रिप्लाई को सबमिट करेगा. सो आप अपने से if you want to try, then it will create some problem to you, because you are not aware lots of the section and lots of the amendment in the income tax. So it is the advisable to connect with your professional. And one more important thing, sometimes what happens, suppose that I belong to Bihar. मैंने क्या किया था कि when I was in Bihar, I filed my return in I have apply my PAN card in Bihar. तो आज तक PAN card में मेरा जो address है, that is the mention in Bihar. But now I am in Delhi. I got notice on my mobile number or my email ID, but my assessing officer is in Bihar. Okay, then it will create the problem. Suppose that you are taking the help in Delhi, or it is the faceless, then there is no issue, because in faceless compliances, anywhere any consultant can provide the such kind of the facility, because he has not to appear physically. But अगर वो इनकम टैक्स ऑफिस में ये लिखा हुआ है कि you have to purchase physically, then you have to assign your work, or you have to discuss this problem जहां पर आपका पैन कार्ड आया है. अब now you will say कि ये कैसे पता चलेगा. तो once you got notice, तो they give the detail कि ये नोटिस कहां पर आना है और कैसे जाना है और किसके पास जाना है. तो this is the one thing जो you have to understand. इसके बाद आप नोटिस देते हो, देन assessing officer again see कि इसमें कुछ कमी बेसी तो नहीं है. If they are satisfied with your answer, with your reply, then they issue order. If there is some liability on you, then they ask to pay. If there is no liability, then they provide the order. There is no such as the problem, and whatever the notice we have sent, like escaping of income, or the client has not shown any
in any source of income, or they have not disclosed. Now it is a rectify. We have got the clarification from client, and there is no tax liability on client. So this you have to do. Now suppose that आप कहते हैं कि मनीष आई डिडंट गेट एनी एसएमएस, और सम टाइम व्हाट हैपन ऑन आवर ऑनलाइन पोर्टल, हमारा मोबाइल नंबर ही नहीं होता है, बिकॉज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैज बीन डन बाय सम प्रोफेशनल, और माइट बी पॉसिबल 3 years 4 years 5 years back where I am not connected that person. Suppose that मैं 5 साल पहले बेंगलोर में आई वाज इनटू जॉब, वहां पर किसी ने एक कैंप लगाया था और उसी बंदे ने मेरा ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया, एंड ही हैज पुटेड ओन मोबाइल नंबर, ही हैज पुटेड ओन ईमेल आईडी. रीजन क्या था कि जब आप लॉगिन करते हो देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंड सम ओटीपी, और उसी के थ्रू आपका लॉगिन रजिस्ट्रेशन होता है. देन इट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू कि अगर आपने अपना लॉगिन चेंज नहीं किया है, यू हैव नॉट अपडेटेड योर email ID or phone number, then whatever the communication is going to that particular number. So it is my advice to you कि check your income tax portal, जहां पर you have to see present address कहाँ का है. Suppose that present address in my scenario it is of Bihar. Now I am residing in Delhi NCR. तो मैं पैन कार्ड में पहले अपना एड्रेस चेंज कराऊंगा. दैट इज द वन प्रोसेस. Another thing, I will see in the contact detail कि मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल आईडी अपडेटेड है या किसी और का. If it is updated someone else, तो आप उसको you can edit. आप उसको edit करके whatever you have the current number, whatever you are the current email ID you are working, you are using, आप उस चीज को वहां पर डाल दो. So next communication आपके पास आ जाए. This is the one thing. Now once you have login your ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल, वहां पर एक होता है पेंडिंग वर्क फॉर यू. पेंडिंग वर्क का एक कॉलम होता है वेयर यू हैव टू क्लिक, देन यू विल फाइंड सम नोटिसेस इश्यूज बाय डिपार्टमेंट टू यू. वहां पर वो सारा का सारा नोटिस या जो प्रॉब्लम है आपके साथ वो शो हो जाता है. दैट यू हैव टू सी कि कहीं डिपार्टमेंट ने आपको कोई लीगल कोई इनकम टैक्स का नोटिस किसी भी सेक्शन में, चाहे वो 142 का हो, 143 का हो, 148 का हो या 154 का है, मैंने सेक्शन का नाम लिया, बट वो किसी भी टाइप का नोटिस हो, उससे आपको अगर यू हैव नॉट फाउंड डिजिटल नोटिसेस लाइक मोबाइल पर या ईमेल आईडी पर, और यू हैव नॉट फाइंड योर फिजिकल नोटिस, बट वहां पर आपके पास रखा हुआ, क्योंकि वट एवर द नोटिस इज इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एक कॉपी वहां पर भी दे प्रोवाइड. सो इट इज द माय एडवाइस टू यू कि आप लॉगिन करके एक बार जरूर देख लें. नाउ सम ऑफ क्वेश्चन कैन आस्क बाय सम पार्टिसिपेट कि मनीष मेरा तो लॉगिन आईडी ही मुझे नहीं पता है. देन इट इज द बैड हैबिट ऑफ यू योर्स. आप सबसे पहले आप अपने आईडी पासवर्ड को ब्रेक करो, या जिस कंसल्टेंट के पास आपके पास है आप उससे एक बार आईडी पासवर्ड लेके गो थ्रू हो जाओ कि कहीं कोई नोटिस तो नहीं आया है. ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अदरवाइज वंस द नोटिस विल कम, तो हु विल सफर? ओनली यू. आप चाहे कंसल्टेंट को कितना गाली दे दो या उसके ऊपर केस कर दो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल who will suffer? You will suffer. You have to give reply, you have to consult your consultant, you have to pay. If there is some liability of taxes, you have to pay. बाद में आप कंसल्टेंट से रिकवर करोगे नहीं करोगे, क्यों आप रिकवर भी इसलिए नहीं कर पाओगे कि might be possible you have not contract with that कि भाई अगर तुम्हारी गलती होगी तो मैं ये सारी रिकवरी मैं तुमसे करूंगा, ऐसे टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है. देन it is very difficult to recover from the consultant. और sometime क्या होता है कि you have outsourced your return in the very low amount. वो हो सकता है नेक्स्ट ईयर अवेलेबल भी नहीं होता है, तो to whom you will call? किसको आप पकड़ोगे? सपोज दैट मैंने एक कैंप लगाया और नेक्स्ट ईयर से आई हैव चेंज माय नंबर और आई हैव चेंज माय प्रोफेशन, और मैंने सारा चीज कनेक्शन आपसे दूर हो गया, देन आप किसको पकड़ोगे? देन इट इज द एडवाइस टू यू कि जो हुआ सो हुआ. आज आप अपने आप को सेव करो, चेक कि इनकम टैक्स का पोर्टल का आईडी पासवर्ड आपके पास है या नहीं है. इफ यू डोंट हैव आईडी पासवर्ड, तो जो भी आपका करंट कंसल्टेंट है आप उससे मांगो. इफ ही इज नॉट एबल टू प्रोवाइड, देन ब्रेक इट. पासवर्ड ब्रेक करने का ऑप्शन होता है थ्रू आधार ओटीपी, थ्रू डिजिटल सिग्नेचर, थ्रू
email ID, वहां पर they have given 2 and 3 ऑप्शन, आप कोई ना कोई ऑप्शन से अपना पासवर्ड ब्रेक कर लो, देन गो फॉर पोर्टल, जहां पर यू विल फाइंड आउट कि हम मेरे अगेंस्ट में कोई नोटिस या ऐसा कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं आया हुआ। इवन यू कैन डाउनलोड योर होल रिटर्न वट एवर यू हैव अपलोडेड ऑनलाइन। तो उससे क्या होगा कि कल को आप लोन के लिए अप्लाई करते हो या एनीबॉडी हैज आस्क्ड एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि प्लीज प्रोवाइड द 3 इयर्स ITR, आप किसी बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, देन दे आर आस्किंग एटलीस्ट 2 ईयर ITR, तो कम से कम आपके पास होगा, यू कैन प्रोवाइड as soon as possible। अगर आपके पास you don't have the access, then you are not able to provide। तो it is the my professional advice to you कि अगर आपके पास इनकम टैक्स का लॉगिन आईडी नहीं है तो प्लीज आस्क योर करेंट कंसल्टेंट और एनी रिलेटिव जिसके थ्रू आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। इफ यू हैव already login and password, then check your address mentioned in PAN card or what is your current residing address। And third, the most important thing is check your contact detail, whether your mobile and email ID is existing or someone else. If someone else existing, then you have to edit and replace your mobile number and email ID। And in last, check whole item of income tax, whether you have got any defective return notices or escaping of income notices, any kind of the notice that you have to do। So if you have now question related to income tax notice or anything, you can ask, because once matlab ki if you give the opportunity, so there is no end of the giving the lecture, because just I will give the lots of outflow to you, but most important thing ki what you understand and you are facing any kind of the problem, to provide the solution is the my prime job, because only outflow is giving is the only one thing, उससे बहुत ज्यादा benefit होता नहीं है। Most important thing to communicate and to rectify your problem। So you have any question, any problem, you can ask now। Suppose right now you are not asking question, so just I give you the one example of question। Suppose anyone is saying कि मनीष मेरा जो ITR का login था they have created by someone else, और now आज मेरे को कुछ भी नहीं पता है, and last 2 years I have not filed my return because there is no income since 2020 due to retirement or due to left job or due to deduction in my salary, any reason you are saying there is no income, I have not filed return and I am not aware who has created my profile and what is the ID and password, then आप वहां पर इनकम टैक्स ई फाइलिंग के गूगल पर आप सर्च कर लो, देन यू विल फाइंड द वन पर्टिकुलर साइट इनकम टैक्स ई फाइलिंग इंडिया, वहां पर यू हैव टू क्लिक, फिर वहां पर रजिस्टर एक ऑप्शन आता है, देयर इज ऑप्शन लॉगिन करें, दे विल आस्क अगर आपको पासवर्ड याद है देन यू कैन पुट योर पासवर्ड, अदरवाइज फॉरगेट योर पासवर्ड पर आप जाके अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। ओके, एंड आफ्टर क्रिएशन एंड अपडेटिंग योर पासवर्ड और आईडी क्या होता है, आपका पैन होता है, वट एवर यू हैव पैन, सपोज दैट माई पैन इज ABCD 1234K। ओके, so ID is my PAN and password whatever we have created or we have kept at the earlier time। So once you break down your password, तो आज आपको जो भी पासवर्ड रखना है, and it is my advice to you, पासवर्ड हमेशा सिंपल रखे, don't go for a अपर कैप्स में जाए, ये जाए, फिर अंडरस्कोर लगाए, yeah they are asking, might be possible they have the some guideline of the password, but it is my advice to you कि जो पासवर्ड आपको डे टू डे में याद रहे, like your nickname, your birthday, या फिर you have someone, your friend or your kids, your spouse, so that कि कल को अगर भूल भी जाए, या you have to keep one track, like एक मैं आपको just I give the one example, suppose that my father name is Abdesh Prasad। Okay, so what I did, wherever I am
पुटिंग माय पासवर्ड, तो मैं पापा के नेम का फर्स्ट 3 वर्ड जरूर रखता हूँ। ओके, तो मेरे को क्या होगा कि वेन एवर आई लेफ्ट माई आई फॉरगेट माई पासवर्ड, तो मुझे याद है कि पापा का 3 वर्ड है, उसके बाद @1 2 3 लगाता हूँ, या @4 5 6 लगाता हूँ, व्हाटएवर। तो यू हैव टू क्रिएट सम पैटर्न। सो कभी भी अगर कंफ्यूजन आए तो आपको बार बार पासवर्ड रिसेट करने की जरूरत नहीं पड़े। तो नाउ अगर इससे रिलेटेड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क। गुड मॉर्निंग मनीष जी। या गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मैं किसी को देता हूँ अपनी हाँ। और अपनी वाइफ की इनकम टैक्स फाइल करने की, हालांकि हमारी कोई है नहीं इनकम ऐसी जिसके ऊपर टैक्स लगे। तो अब मैं उससे पूछ के अपना कैसे वो उससे आस्क हिम। डेफिनेटली आप उससे पहले एक बार आईडी पासवर्ड आप मांग लो। ओके, एंड विद द आईडी पासवर्ड आप वहां पर आप यू विल गो फॉर द फाइल योर रिटर्न। फाइल योर रिटर्न में व्यू योर रिटर्न आता है, जहां पर जो भी 1 साल 2 साल 3 साल का आपने रिटर्न फाइल किया है वो सारा चीज आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक। और वहां से विल फाइंड आउट कि कोई डिफेक्ट है कि नहीं, कोई नोटिस आया है कि नहीं। आपको अगर देयर इज नो नोटिस, एज यू आर सेइंग देयर इज नो इनकम, ओके सर, तो देयर इज द चांसेस कि देयर इज नो नोटिस। तो क्या होगा कि अगर नोटिस नहीं है इसको आप भी कंफर्म हो गए कि देयर इज नो सच एज द इनकम टैक्स लायबिलिटी, आप भी निश्चिंत रहोगे। सो आप इसको एक बार आजकल में कर लेना। इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लम आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, और यू कैन कॉल मी कि मनीष मेरे को यहाँ पर देखना है या कहाँ पर देखना है। अगर मैं फ्री नहीं हुआ तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, आई विल गिव द आंसर ऑन द व्हाट्सएप और आई विल कॉल यू। नहीं, ऐसे है कई दफा क्या करते हैं वो रिटर्न फाइल करता है ना, रिटर्न तो फिर भी फाइल कर देता हूँ नो इनकम की भी। हाँ, तो कहता है उससे उसको पोर्टल पे या किस तरह से बाई पोस्ट भी भेजो, वो कई दफा भूल जाते हैं। फिर वो मैं जानना चाहता था, उसके ऊपर तो नहीं होता है कुछ। हाँ सर, एक बार आप प्रीतम जी एक बार आप ले लीजिए पहले आईडी पासवर्ड। ठीक है सर, और उसके बाद आप ओपन करिए। अगर फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मनीष के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, यू कैन डिस्क्लोज योर फिनेंशियल, तो आईडी पासवर्ड मेरे साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट आई विल गो थ्रू कि कहीं कोई इश्यूज है या नहीं है, वो मैं एक बार चेक करके बता दूंगा आपको। थैंक यू थैंक या एनी अदर क्वेश्चन? यू बस, थैंक यू। या आपका तो ठीक है सर, थैंक यू। एंड एनी अदर पार्टिसिपेट? have any question? Well, actually, I had, but it is not regarding this filing. Sir, actually, I wanted to ask that means if suppose I am earning 50 rupees or I am earning 500 rupees, so means at that time also I can means file for this ITR. देखिए इसमें क्या होता है अलीशा, एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज सेइंग once your income is less than 5 lakh rupees, okay, then there is no need to file a return. It means whatever you have income that is the less than 5 lakh rupees, there is no need to file a return. But suppose that my father has given 10 lakh rupees to me and I have created one fixed deposit in bank of in any bank. तो बैंक क्या करता है, बैंक इज प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 5 to 6% इंटरेस्ट टू मी। 10 लाख के ऊपर 5 to 6% कितना हो जाएगा, इट विल कम्स अराउंड 50,000 और 55,000 एज पर एफडी रेट। मान लो कि 6% है तो इट इज गोइंग टू 60,000। बट और मेरा और कोई इनकम नहीं है, मैं अभी मान लो कि स्टूडेंट हूँ या मैंने जॉब छोड़ दिया है, मेरा जॉब छूट गया है ड्यू टू एनी रीजन, आई हैव ओनली इनकम ऑफ द 60,000 रुपीज। मैंने क्या किया, मैंने अभी आपको क्या बताया कि देयर इज नो नीड टू फाइल रिटर्न टिल 5 लाख रुपीज। ओके, अब आप कहोगे मनीष मैं तो रिटर्न नहीं फाइल करूंगा, देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। रीजन कि बैंक जब भी आपको 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है ऑन फिक्स डिपॉजिट, वो ऑलरेडी टीडीएस कट कर लेता है। इट मीन कि आपके 60,000 पर डिपार्टमेंट बैंक हैज डिडक्टेड 6,000 एज ए टीडीएस, और आपके अकाउंट में से 54,000 ही क्रेडिट करेगा जब आप एफडी को मैच्योर करवाओगे। तो व्हाट इज द लॉस टू यू? 6,000। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो 6,000 विल नॉट गेट एज ए रिफंड। सो
अगर किसी भी कारण से देयर इज सम लायबिलिटी ऑफ टीडीएस, जो टीडीएस कट चुका है या कटने वाला है, अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन है और इवन यू हैव इनकम 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, लेस देन 5 लाख रुपीज, तब भी आप इसको जरूर फाइल करो. अगेन we have seen lots of the online गेम होता है जहां पर हम मतलब कि प्ले कार्ड हो गया, क्रिकेट हो गया, गेमिंग पोर्टल बहुत सारा है जहां पर someone has earned 500, 2,000, 10,000, 500, 100 रुपया में तो दे आर नॉट डिडक्टिंग टैक्स टीडीएस. बट अगर 5,000, 10,000 हो जाता है तो दे आर डिडक्टिंग टीडीएस एट द रेट ऑफ 33%. तो दिस इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पास टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इवन आपका इनकम 5 लाख से कम है और someone has deducted your TDS, तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए टू क्लेम दैट टीडीएस एज वेल एज टू डिस्क्लोज योर इनकम. Okay. And sir, means what will happen if suppose my fixed deposit is getting matured and then on same day I am means fixing it for next 5 or 10 years, so देयर इज नो that इशू. मतलब इसमें क्या होता है, सपोज दैट आज आपके पापा ने 10 लाख रुपीस दिया और यू हैव मैच्योर, यू हैव kept FD for the 1 year. Okay, तो 1 year में they have to give the 60,000 at the rate of the 6%. तो ऑलरेडी वो 6,000 TDS काट लेगा. नाउ आप उसी बैंक में सेम डे आप फिर से FD करते हो तो कहेगा इट्स ओके, टोटल अमाउंट 10 लाख प्लस 54,000, क्योंकि 6,000 तो आपका ऑलरेडी TDS में गया. अब वो कहते हैं कि ठीक है, वी विल स्टार्ट द न्यू FD विद 10 लाख 54,000 से, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. तो आप सेम बैंक में करो, अनदर बैंक में करो, आप अपने घर लेके आओ, डजंट मैटर. वंस FD इज मैच्योर्ड तो उसके ऊपर TDS कटना ही कटना है. okay sir. एनी अदर क्वेश्चन? अगर सेम डे नहीं किया तो बैंक वाले क्या करते हैं, टैक्स काट के रिन्यू करते हैं उसको? हाँ जी सर, एक्चुअली क्या होता है, सपोज इसी केस को लेके चलते हैं कि 10 लाख के ऊपर 60,000 मुझे इंटरेस्ट मिलना था. ओके सर, और मैंने बैंक नहीं गया था. जनरली बैंक रिन्यू कर देता है. तो बैंक व्हाट विल डू कि 60,000 के ऊपर जो 6,000 का TDS है वो तो मेरे 26 ईयर्स में आ चुका है, तो बैंक हैज बैलेंस ऑफ ओनली 54,000. तो 10 लाख प्लस 54,000 ये दोनों मिला के वो FD को रिन्यू करेगा, क्योंकि उनके पास तो 6,000 है ही नहीं ना, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा कर दिया है ना. ये चीज होता है सर. Hello. Yeah, Yeah, ma'am. just to come in here, Manish sir, that you know, every year we are filing income tax, okay, and Yeah. there is not much of an income because my husband and I are retired. So Okay. what is happening is that, as you said, TDS is gets cut and comes, but the CA keeps demanding a fee. So I told him that either you don't file or you reduce your amount. So he's saying no, I have to take. So it's like, you know, principal amount तो कुछ है नहीं और उसके ऊपर वो levy करता है अपनी fees. So it's sort of a burden for us because so I was just thinking कि if I stop it, because ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता है, at the most as you are saying कि कोई भी FD का ये आ गया, you know, request और तो कुछ है, तो फिर चालू रखना चाहिए कि बंद करना चाहिए? That's what I'm trying to ask. That I am saying, ma'am. First of all, you must have your ID and password. Check your the ID and password 26 years. 26 years में if there is some item is coming like bank has deducted tax, तब तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए और you will get refund. Suppose that your total income with कुछ पेंशन आ रहा होगा या you have the one house property जहां से कुछ रेंटल इनकम आ रहा है, you have some FD जहां से you are getting some interest. Okay ma'am. Then लेट्स अज्यूम ये अमाउंट पूरे साल भर का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कुछ भी होता है, दैट इज द लेस देन 5 लाख रुपीस जो मैंने आपको बताया. ओके, बट आपके बैंक वाले ने अगर TDS काटा हुआ है तो डेफिनेटली यू हैव टू फाइल रिटर्न बिकॉज ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गॉट द इंफॉर्मेशन. तो अगर इफ यू डिसकंटिन्यू तो आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर माइट बी पॉसिबल यू विल गेट नोटिस. नोटिस आने के बाद व्हाट विल हैपन, चाहे वो आप मेरे पास आओ, एक्स के पास जाओ, जेड के पास जाओ,
नोटिस देखते के साथ लोग 5,000 10,000 आपसे डिमांड करेंगे, कहेंगे कि सर मैम I have to prepare reply, or I have to give the it will take at least 5 hours, 1 hour, 2 hours, yeah, 1 day and 2 days. So this is my charges. So it is advisable to you if there is some mutual fund transaction, some equity share transaction, or some FD interest is coming in your income. So don't stop your filing return. Continue करें. Yeah, now it is the cost is coming like I don't know कि वो कितना चार्ज करता है. Suppose that he is charging 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. इससे ज्यादा तो चार्ज करना नहीं चाहिए. अगर इससे ज्यादा कर रहा है then obviously बात है कि it is the burden for you. लेकिन if he or she is charging between 1,500 to 3,000 to 4,000, then you can negotiate. Otherwise, this is the general charge. Might be possible it is the you are getting some financial burden because you don't have so much income. So that's another part. Otherwise 1,500-2,500 तो एक नॉर्मल सा चार्ज होता है. कितना भी रिटर्न फाइल करने में कम करें मैम, तो उसको भी 2-3 घंटे लग ही जाते हैं किसी भी रिटर्न को करने में. ठीक है, ये चीज. अब तो डिसकंटिन्यू करने का तो आप सोचना मत. डोंट थिंक अबाउट द कंटिन्यू. अच्छा, डोंट थिंक अबाउट डिसकंटिन्यू. Even today, if what I will do कि I will share one video on this WhatsApp group जहाँ पर है कि suppose that in your family there is no right now no more 2 years back या 3 years back या 4 years back देहांत हो जाता है. Even that person can get income tax notices because death certificate आपके पास है, but you have not given the information to income tax department कि this person or having this PAN is now no more. ओके, तो इनकम टैक्स को तो पता नहीं है कि वो बंदा जिंदा है कि मर गया है. ओके, तो वो व्हाट दे विल डू कि व्हाटएवर दे हैव द इनकम, जिस साल में उनका देहांत होता है, ऑब्वियसली बात है, यू विल नॉट फाइल रिटर्न. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल सेंड द नोटिस. तो इन दैट वीडियो आई हैव डिस्क्राइब कि हाउ यू कैन फाइल एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस इफ return is not filed by the death person. अब you will say कि death person का तो return तो फाइल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो आदमी ही नहीं रहा. Okay मैम, then it is a liability of their legal heir कि उसके return को कैसे फाइल करें. तो that I will share and you can watch and you can think कि what is the consequences if you have not filed return. Thank you. Yeah. So any other question? Or if you have any other question, you can put on our WhatsApp group or to DM to me, Alisha or ma'am, Savana ji or Nupur ji, anyone. So we will reply or we will give the guidance to you how you have to go ahead. Yeah.